Assalamu alaikum everyone. I hope my voice is audible. I was just waiting for everyone to join in, and I hope that everyone is here by now. So, this is you can call that this is the review session of our course, and we have got almost all participants from different courses. So, there are some new participants as well. I would like to just give a very quick introduction. It's Fatma Zahra, your trainer over here. I have got certification from UK, and I'm also doing MPhil in linguistics. Our organization, Phonics Lab Private Limited, is having its only online shop in Pakistan. So we sell online all the materials of Jolly Phonics program, and we also provide consultancy for curriculum designing, for book lists and everything. And I have also worked on some pilot projects in Pakistan with some public and private organizations. I'm also working to design an Urdu version of Jollyphonics program. I must say that it's basically an Urdu version of the teacher's book, so that the teachers who want to know more about the program and who are not clear about some concept, they can take help from that Urdu version. Okay, so now this is the time when we know that what are we going to discuss in this session. Basically, it's going to be a recap of our sessions in Ramadan. I can understand that there were many people who were not able to attend some of the sessions, some of the classes, and they were not able to complete their assignments and pair works as well. So in this session, we are going to discuss all of your pair works and the teachings. I can understand that we have got some teachers over here who are facing some problems during the new academic session, during teaching in the new academic session. And we have got some people over here who are the school admins, and they want to try Jolly Funnies program in their schools. So when you get some training and then you try to implement the training ideas in the school, then there are some more problems coming up, and you feel that you want to ask something to the trainer. So this session is especially for this purpose. Okay, people are still joining in. We have got just 2 minutes for this activity. You can do this activity on your notepad and share in the WhatsApp group, and you can also do this activity in the chat. Okay, what you know about Jolly Forest program, what you want to know, and do not write anything on what you have learned, because we will complete this one at the end of the session. It's a very I must say, a very quick session for all of you, and it's not going to cover all aspects of Jolly Furnish program. It's just going to cover the first level or the first teaching of book 1. So you have got just 2 minutes to write down in the chat box what you know about Jolly Furnish program and what you want to know. If you have attended my previous sessions, my previous classes, you can tell us that what you have learned and what was missing in the previous session, so that I could focus on your questions as well. Okay, so when you're writing, if you have any questions in your mind and if you want to introduce yourselves, you can raise your hand so that I could unmute you or check your status if you are able to say something or not. If any one of you have to say anything, you can raise your hand and I will check if I could unmute you. We have got almost 29 participants from different courses, and we are here together to discuss teaching of Pupil Book 1. Okay, so I am keeping an eye on the chat. Let's start typing what you know of Jolly Funnest program.
and what you want to know. Thank you. Okay, I'm getting your messages. Okay, it's someone from. I have two raised hands. Let me check. This is Noor Ehsan. Okay, Noor, can you please unmute yourself? Can you please introduce yourself and let us know? Assalamualaikum. Walaikum Assalam. How are you? I'm good, Alhamdulillah. How are you? I'm well, dear. My name is Noor Ehsan and I'm doing course from GMCI. मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं आप मुझे बता सकते हैं जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन क्या है? Well, Noor, we are running different courses at the moment, but Okay, I will tell you later on about this. If you want, okay, if you have any questions regarding Jolly Phonics or any teaching, then you can ask right now, okay? Because I don't okay, want to waste the time of others, okay? I will message you, okay, okay? okay. If I want to contact with you, how can I contact? I can share my contact details, okay? I will share at the end Okay, all of the contact details. thank you. Don't worry. Thank you, Miss. Okay. Yeah. Well, there is one important thing that this is my logo over here, Phonics Club Private Limited. If you Google Phonics Club, you can find my website and the whole online shop and all of the contact details as well. You can email me, you can WhatsApp me. Yes, there is someone else with the name Shayan. Can you please unmute yourself? Do you have any questions? Assalamu alaikum. My name is Saima Ji, from Lala Musa. Ji Saima, how are you? I'm fine. Okay, Saima, you have any questions? No, ma'am. Okay, Saima, it's good that you are here on time and we are going to discuss that how you can use this effectively in your school, okay? Because this is your Okay. third year with Jolly Finance program. So it's very important to know that if you have the books, if you have got the training, if you have got everything, but still you are trying to know that what is effective and what is not effective. Basically, the problem is that when you start teaching, implementing the program, it becomes difficult to know that what was wrong earlier and how you can unlearn the previous concepts or the wrong ways of teaching reading and writing. So in this training session we are going to discuss and we are going to focus more on Jolly Phonics methodology. Okay. Yes. Okay, we have another hand raised. You can unmute yourself and you can, I have just seen your question as well. If you want to know more about the whole procedure, then you need to do more of our courses. But if you have anything to say about yourself, Assalamu alaikum. Ji walaikum Nasir salam. here from school. Nasir here from Lahore. I am running a private school in Lahore currently. My question is in Jolly Phonics, why actions are so important? Even though they are not, when students start to learn the phonics, they the further in their life they don't need to carry the actions in real life and mean that कि जब आप साउंड प्लान करना सीख लेते हैं तो बाद में एक्शंस की जरूरत नहीं रहती तो एक्शंस आर क्यों जरूरी हैं स्टार्ट में Well, you have a very good question, and I must say it's a very important question. And there are people over here in my training session who are using these actions, and who are the teachers from Pakistan and from abroad, and they know why these are important. So I would like them to answer your question. Besides, I have just one reply to your question that. Well, it is observed that sometimes
The children are in the school for the one whole year. They are coming in the play group, they are coming in the nursery, but after 1 year they don't know which sound is this. They are unable to identify, they are unable to recognize the sound. So the actions help them in relating a symbol or a letter with the story and the sound. So the actions makes a brain connection. Okay, we have got Miss Neelma over here. Miss Neelma, is it possible for you just to unmute yourself for 2 minutes and answer this question? And please introduce yourself as well. Yes, Assalamu alaikum. My name is Nilma Aziz, and I'm teacher. I'm a teacher in Saudi Arabia. Actually, I'm also mother of my child is 4.11 months. He is not able to read and learn. Even he can't speak. But with the action and it's with the action of the each letter, my son would be is able to speak and read the readers. So I think it's very helpful. The action is very helpful to any child to remember the sounds, and it is the practically proved. So I think it is very important for every child, and it remains in their mind. Even my child is not doing the action now, but he knows the sound of the letter with the help of this action. So I think it is very important for every child. Thank you so much, Nilma, for your answer. We have got many people over here in this training session who are doing some other sessions as well, like they are expert in STEM, they are expert in Montessori and some other program. We will also invite them to discuss their ideas on the Jolly Phonics program and compare Jolly Phonics program with other things as well. Okay, so it's a, as I have told you earlier, that it's a very quick session and we are not going to get into details of Jolly Phonics program, but we are going to discuss the main aspects of book 1. And we always start with the 42 sounds of Jolly Phonics program and see that how important these sounds are in the teaching aspect and how we can relate these sounds with our Urdu sound and how we can differentiate in other sounds. So I'm not going to play the complete audio over here because it's available on the YouTube and I can share its link with you guys as well. So let's have a look at just a few sounds here. S, O, fo, y, ch, hush, this. Especially this sound, because this is problematic for most of our students and teachers. You see that whenever this sound is pronounced, a child or teacher is supposed to pronounce it correctly. In fact, because of our mother tongue influence of Urdu and Punjabi, we mix this sound with l, with dal. हम इस साउंड को दाल की आवाज के साथ मिक्स कर देते हैं और इसको हम रिस के बजाय दिस प्रोनाउंस करते हैं. अगर आप गौर से देखें टंग पोजीशन और अगर आप खुद से इस साउंड को प्रोनाउंस करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि आपकी अगर प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त होगी तो आपको अपनी टंग बिटवीन टीथ विजिबल नजर आएगी. आपकी जुबान की पोजीशन डिफरेंट होगी इसकी प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन अगर आप इसको उर्दू के तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो उस वक्त इसकी पोजीशन डिफरेंट होगी. सेम इज द केस विद दिस वन, दिस साउंड. हम इस साउंड को उर्दू के थ के साथ बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते हैं और हम इस साउंड की प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल जो है इसकी एग्जैक्ट जो शेप है उसको भूल जाते हैं. स्टोरी और एक्शन जो जॉली फनिक्स प्रोग्राम में क्लाउन्स का एक्शन है जिसमें टंग की बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी है, उसमें आप देखेंगे 3. अगर आप इसको अरबिक लेटर या उर्दू के लेटर से के साथ प्रोनाउंस करने की कोशिश करें देन इट इज़ द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर साउंड. Okay, so this video is very helpful in realizing your sounds. You can use the Jolly Phonics apps and these videos to correct your own sounds as well, because sometimes when you receive the samples of blending from the student, you know that the sounds are not appropriate.
Inshallah, I will share a sample with you as well, and you would see that what is the difference between this one and the actual or the real ones. Okay, so whenever we are talking about jolly phonics, phonics, and teaching of reading and writing, we cannot deny the importance of the IPA. IPA stands for International Phonetic Alphabet. Basically, it denotes the English sound, 42 sounds of English, and we cannot improve. It's not for the students. This IPA is only for the teachers, and the teachers cannot improve their own pronunciation and spoken English and even the teaching of phonics without understanding this IPA. So this IPA have got three major sections over here: short and long vowel sound, diphthongs, and the consonants over here. Again, we have got some consonants that are voiced, and there are some consonants without the highlight color, unvoiced. So voiced and unvoiced. This p is unvoiced, b is voiced. T, unvoiced, voiced. Unvoiced, voiced. So it's important to understand the factors that are related with the IPA, because when we are teaching the sound to the early year learners, it becomes very much difficult to understand that why they are not able to say properly, they are not able to produce sounds correctly, and when they are blending, their pronunciation or the accent is not appropriate. So you are requested to practice IPA, download its symbols and pronunciation, and even I can share the videos in your WhatsApp groups so that you could practice them. So here we have got something in front of us. We have the IPA words and the symbols over here, and I can understand that earlier you may have discussed that we have only 5 vowel sounds. In the IPA and in Jolly Phonics program, you would realize that we have got 20 vowel sounds and 24 consonant sounds. 20 vowel sounds and 24 consonant sounds. So it's impossible to just have 26 letters and teach them whole reading and writing aspect. Okay, so if you want to teach them properly all sound with pronunciation, then you need to introduce IPA to the teachers and Jolly Phonics program, this actions and simple symbols to the students. Okay, it's a page from Urdu version of Jolly Phonics book that is still in the working condition, and it's not yet available in the market, but in the next 2 to 3 years you would be able to get that. In this page in front of you, you can see that we have got the comparison of Urdu sounds with English examples. And if we have people here from Saudi, they know that when people are there from different communities, they have different languages, they say things differently. Like Arab countries, they can't say pa, they say ba. They don't say Pakistan, they say Pakistan. So this is same for all languages. If you have Punjabi, Seraiki, Sindhi or Urdu influence, you say sounds differently. But the English sounds are also different. So let's have a look at these comparisons of the sounds with IPA symbols as well. We have got English symbol here, Urdu symbol, word example, and the IPA. So I will give it just 2 minutes to have a look at this handout, and then we will move forward.
So people are still joining us. I want to repeat for them that this is the alignment of IPA with English and Urdu symbols, and you can relate it with your problems when you are saying the words and you are not able to say them as per the pronunciation. And even the children, when they are reading, when they are writing, and when they are speaking, they can't say properly, and it's all because of the phonics, because they have not learned the phonics in the first place. So it's never too late. The teachers can improve their phonics. They can listen to the sound, write down the IPA symbols, download IPA dictionaries, and start practicing reading and listening through IPA instead of the words. I just give you one example of a word. Let's see that if you have a word in front of you and you have to say it, like we have basically these are all decodable words over here, so we cannot okay, let's have this word, phonemic awareness. If you try to say it with the sound and you don't know about the rules and the IPA and the symbols, and if you're just a child, you would try blending it like this: a, w, a, r, n, s. You won't be able to understand that how you can relate it with other sounds and why it's different. इसकी जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो उसके फोनिक्स से मैच क्यों नहीं कर रही है. अगर आप ये वर्ड देखें यंग, अगर आप इसकी फोनिक्स को देखें य ओ अ ng, so it's not matching with the pronunciation. Why it is like this? So it's you can get to know about this through IPA and phonics and understanding Jolly Phonics program in great detail. अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को फॉलो करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिर ये साउंड ऐसे क्यों हैं, और आप इनको भी, इनकी ब्लेंडिंग, इनको फोनिक्स के जरिए से कैसे पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग्स को याद किए या स्पेलिंग्स को याद करवाए बगैर. सो जॉली फोनिक्स प्रोग्राम में हमारे पास लेसन प्लान्स मौजूद होते हैं, 36 वीक्स की प्लानिंग मौजूद होती है. इसके अलावा टीचिंग के स्टेप्स मौजूद होते हैं जो आप सबके साथ डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर हुए हैं. ठीक है, हमारे पास जो मटेरियल मौजूद है उसमें जॉली फोनिक्स की हैंडबुक है. जॉली फोनिक्स की हैंडबुक उस सूरत में इस्तेमाल की जाती है जब आप अपने स्कूल में बच्चों को बुक्स नहीं दे रहे. आप जॉली फोनिक्स हैंडबुक में से वर्कशीट्स को फोटोकॉपी करवा कर यूज़ कर सकते हैं, और इस सूरत हाल में सिर्फ एक हैंडबुक से आप अपने स्कूल के, अपनी क्लास के सब बच्चों को जॉली फोनिक्स प्रोग्राम पढ़ा सकते हैं. यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जॉली फोनिक्स प्रोग्राम बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, और ना ही आप इसको सारी किताबें ख़रीद कर ही. एक कॉन्सेप्ट माइंड में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है समटाइम्स कि हमें बहुत सारी बुक्स खरीदनी है, इसके बाद ही हम जॉली फोनिक्स पढ़ा सकेंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इवन यू कैन यूज़ जॉली फोनिक्स मेथडोलॉजी विदाउट यूजिंग अ सिंगल बुक. वी हैव गॉट प्यूपल बुक्स. सबसे बेस्ट जो इस वक्त रीडिंग का रिसोर्स चल रहा है प्यूपल बुक्स है. प्यूपल बुक्स से 2 वर्जन है, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर्स, एंड आई लाइक द ब्लैक एंड वाइट वर्जन because it has got the coloring option as well, and it can cover Jolly Phonics concepts in just 2 books. In the colored version you have another book. आपके पास एक book 3 भी है, और book 3 जो है it is an extra practice, but if you want your child to quickly master the skills of reading and writing, then the black and white version is far better. Then we have got activity books. Activity books have got sticker sheets, and these are very fancy and very expensive books. You can use it for home, and some schools are also using it for school purposes. They are workbooks. Workbooks were the first one designed in the Jolly Phonics program, and these are good for introduction, but they don't have blending practices over there, and these are not recommended for blending. There are almost 5 Jolly Phonics levels of readers. There are lots of digital resources, and I have written this font over here because it's very important to understand the Sassoon font of Jolly Phonics program.
When we are working with early year learners, the font is of great importance because the font confuses them a lot. So be careful that Jollyphonics font is child friendly. These are the 5 basic skills in Jollyphonics program. और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने ये बहुत सारे सेशंस में इन सब स्किल्स को डिस्कस किया है. नाउ वुड जस्ट क्विकली रिव्यू दिस. हमारे पास 5 बेसिक स्किल्स हैं और यहाँ पर 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग है. ये दोनों डिफरेंट हैं. जो बेसिक स्किल्स हैं वो जॉलीफॉनिक्स के पूरे प्रोग्राम को कवर कर रही हैं और जो 5 स्टेप्स हैं वो सिर्फ हमारे जो प्यूपिल बुक के लेसन है उनको कवर कर रहे हैं. सो फर्स्ट टॉक अबाउट द 5 बेसिक स्किल्स इन जॉलीफॉनिक्स प्रोग्राम. सो इट्स लर्निंग द लेटर साउंड. सबसे पहला स्टेप है हम स्टूडेंट्स को लेटर की साउंड एक्शन से, स्टोरी से, सॉन्ग के जरिए से करवाते हैं. देन वी टेल देम हाउ टू फॉर्म द लेटर्स प्रॉपरली, लेटर की प्रॉपर फॉर्मेशन. देन ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग जो है इसकी एक आर्म ब्लेंडिंग है और इसके अलावा डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ब्लेंडिंग के जो हम डिस्कस करेंगे. देन साउंडिंग. इसके बाद हम देखेंगे जॉलीफॉनिक्स की प्यूपिल बुक्स के अंदर साउंडिंग का मार्जिन कहाँ पे है, हम साउंडिंग किस तरह से करवाते हैं. देन द ट्रिकी वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स जो इरेगुलर वर्ड्स हैं और इनको पढ़ाने की स्ट्रेटजीज क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम एज वेल. ओके, नाउ दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग. जब भी हम कोई नई लेटर साउंड स्टार्ट करवाते हैं प्यूपिल बुक 1 के अंदर, तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा फ्लैश कार्ड्स के साथ रिवीजन. इसके बाद नई साउंड की इंट्रोडक्शन स्टोरी के साथ, एक्शन के साथ, लेटर फॉर्मेशन, ब्लेंडिंग एंड साउंडिंग और लास्ट में हर रोज़ हमारा स्टेप होगा डिक्टेशन. जब हमारे स्टूडेंट्स वर्ड्स पर नहीं आए हैं उस वक्त तक हम उनको साउंड्स की डिक्टेशन करवाएंगे. इसके बाद 2 लेटर वर्ड्स की डिक्टेशन, इसके बाद 3 लेटर वर्ड्स की डिक्टेशन. यू कैन ऑल्सो एंड योर सेशन विद द जॉली सॉन्ग and then you can use extra word banks. The word banks given in the teacher's book of Jollyphonics program are very good, and you know that there are students who are above average and they can quickly cover their work and they need something extra for themselves, so you can use those word banks for them. Okay, so first step for a 4-year-old child, maybe in an online classroom. Because I can see that there are many schools who are running their program and there are online classes going on. तो क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासरूम के अंदर टीचर्स को समझ में नहीं आ रहा होता कि अब मैंने कैसे जो है वो इंट्रोडक्शन भी करनी है, चाइल्ड की असेसमेंट भी करनी है, अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और साथ साथ आपने ब्लेंडिंग, लेटर फॉर्मेशन, हर चीज़ को चेक करना है. सो सबसे सेफ साइड तो ये होती है कि आप उनको कोई भी क्लास वर्क कॉपी पे लिखने के लिए दे देते हैं. इसके बाद हमारे पास प्यूपिल बुक मौजूद है. सो 45 मिनट्स हैं आपके पास या एक ब्लॉक पीरियड है इंग्लिश का. उन दोनों को आपने कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है. इसके बाद आपने डिक्टेशन कैसे करवानी है. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन डिक्टेशन किस तरह से करवाई जाए. सो आई मस्ट अप्रिशिएट के इस वक्त जो हमारी टीचर्स हैं दे आर जस्ट लाइक फ्रंट लाइन वर्कर्स. दे आर वर्किंग हार्ड फॉर द स्टूडेंट्स और वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख रही हैं कि किस तरह से वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस को बेटर कर सकती हैं. ऑनलाइन क्लासरूम्स कभी कभी हमारे पास व्हाट्सएप पर होते हैं, कभी ऑप्शन व्हाट्सएप की अवेलेबल होती है और समटाइम्स हमारे पास जूम की ऑप्शन अवेलेबल होती है. जूम की ऑप्शन जो है आई कैन अंडरस्टैंड दैट्स वेरी हेल्पफुल, वेरी गुड, बट सम टाइम बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके पास जूम पर अवेलेबल नहीं होते हैं. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द व्हाट्सएप, देन व्हाट्सएप पे आपको इट्स बेटर कि आप एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन, अपना एक पूरा वीडियो लेक्चर बनाकर पोस्ट करें और उसको जो है स्टूडेंट से आप डिस्कस करें कि किस तरह से वो आपको इनबॉक्स कर सकते हैं अपने अपने सिंबल्स, अपने रिटर्न मटीरियल्स, अपने टेक्स्ट. और साथ साथ आपको पेरेंट्स को भी ये गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने बच्चों को कोई भी चीज़ डिक्टेट करवाते वक्त मेमोराइजेशन पर फोकस नहीं करना. ओके, सो वी स्टार्ट विद द ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग में सबसे पहले अगर हम ग्रुप 1 को देखें, ग्रुप 1 में हमारे पास कितनी साउंड्स हैं, एट, ई, प, एन. हमारे पास सिर्फ 2 वॉल साउंड्स हैं ग्रुप 1 में और इसके बाद हमारे पास बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं. हम साउंड्स करवाएंगे, साउंड्स के बाद हम 2 लेटर्स की
ब्लेंडिंग करवाना शुरू कर देंगे हमको. We are going to focus on these 5 steps. Be careful, these 5 steps are very important in teaching, and these steps are taken out from teacher's book lesson plans. Okay, so let's have a look at the time management. If you don't have a block period, you can quickly work out like this. Sometimes teachers के पास सिर्फ 45 minutes होते हैं, so they can have very quick revision with flashcards. Story and action 5 minutes. और ये क्वेश्चन मेरे पास कई दफ़ा आया है कि हम 5 मिनट्स में स्टोरी कैसे सुना सकते हैं. स्टोरीज बहुत लॉन्ग होती हैं, सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू शॉर्टन योर स्टोरीज. और स्टोरी का ऑब्जेक्टिव क्या है स्टोरी का, और आप स्टोरी को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं. लेटर फॉर्मेशन सिखाने की ऑनलाइन क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप लेटर फॉर्मेशन की एक छोटी सी वीडियो जिसमें लेटर की फॉर्मेशन होती हो वो आप शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, उसको एम्बेड करें अपनी प्रेजेंटेशन में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें, और देन लेट देम ऑब्जर्व दोज letter formations. Give more time to the blending and sounding, and then come dictation. Even you can use blending and sounding in dictation as well. Okay, so if you have any questions regarding this, you can ask me now. Let's have a look at this page from colored book. I have intentionally taken this page because it has got 2 options, and it is from the second group of Jollyphonic sounds. In the first place, we have got the sounds, and intentionally we have got the capital and small letters over here. And then we have this one caterpillar k, and this is kicking k, and we have got blending over here, and this is segmenting or sounding. हम blending करवाएंगे. blending करवाने के लिए सबसे important बात ये है कि जब teachers blending करवाएंगी तो वो ख at पूरा word cat नहीं बोलेंगी और बच्चों को इसको blend करने देंगी. अगर टीचर इस वर्ड को बोल देंगी तो बच्चे खुद से ट्राई नहीं करेंगे और टीचर्स को कॉपी करेंगे. ठीक है. ख ई फ. अगर आपका स्टूडेंट क्लास में खैट नहीं पढ़ रहा और आपको बार बार ख एट ही सुना रहा है तो इट्स क्वाइट नॉर्मल. ये बहुत आसान है, इसमें कोई गलत बात नहीं है. इट्स ओके. सो डोंट वरी and keep on doing your work. After 2 to 3 weeks your child would be able to start blending. यहाँ पर हमारे पास 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं. कैटरपिलर ख, किकिंग ख, एंड दिस डबल ट्रबल ख. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स क्योंकि हम इनको अपने जो लॉन्ग कोर्सेज है उनमें कवर करेंगे. सो वी हैव गॉट सम रूल्स फॉर दिस एज वेल. नाउ लुक एट दिस. साउंडिंग हम कैसे करवाएंगे? We will ask, which picture is this? Cat. Which sound is this? K, cat. K sound is in the cat. Okay, where is K in the cat? In the beginning. Good. Okay, kite. Which K sound is in the kite? Okay, where is the sound? Camel. Where is the sound? And then parrot. Is there any K sound in the parrot? No, we don't have any K sound in the parrot. This is the actual practice. You can also use your finger phonics books for storytelling, and you can share lots of pictures over there. You can have the formation over here. You can discuss the object, like this is cafe, kitten, cat. This is donkey. K comes in the middle. K sound comes in the middle. Castle, cafe, clock, castanets. And if we focus more on blending and sounding, we see that this is from black and white version and this is from colored version. When we are blending, we are just separating sound and then we are joining them. And when we are sounding, we are identifying where is the position of the sound. Is it in the beginning, or it's in the middle, or it's at the end of the session? So let's have a look at this lesson plan. As I have told you earlier that we are working on the Urdu version of Jollyphonics program.
यहाँ पर आपके जहन में यकीनन ये सवाल आया होगा कि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो अपने उर्दू में क्या इसका उर्दू का क्या रोल है। बेसिकली आपके पास जो स्टूडेंट है उसकी मदर टंग उर्दू भी हो सकती है, अरबिक भी हो सकती है, सिंधी भी हो सकती है, सराइकी भी हो सकती है और पश्तो भी हो सकती है। मदर टंग का रोल बहुत ज़्यादा है आपकी टीचिंग के अंदर। कोई भी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए आपको कोई भी दूसरी ज़ुबान सिखानी है तो आपको मदर टंग के साथ उसको हेल्प लेनी है, ठीक है। अगर आप उसको उर्दू में स्टोरी सुनाना चाहें दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अब ये जो बुक हम उर्दू में पब्लिश करने वाले हैं इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन उर्दू में स्टोरी सुनाते वक्त आपने ख साउंड के लिए इंग्लिश के वर्ड्स को फोकस करना है बहुत ज़्यादा हद तक, ठीक है। कार, कैफे, डोंकी, बकेट, kicking, etc. Okay, so let's have a look at some other things as well. You can consult Jollyphonics catalog for lots of materials, and you can see the materials are different but methodology would remain same in almost all materials. Now let's see that how can you use the readers. After Jollyphonics Book 1, there are lots of readers over here, but after Jollyphonics Book 1, you can use level 1 of the reader. And with Book 1, you can use orange level of the reader. I will share some videos that how can you use the readers expertly, and there's also another version of read and see. Using decodable readers, it's a very important aspect. जॉलीफोनिक्स के रीडर्स हमें क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, क्या हम कोई और किताबें नहीं पढ़ा सकते या दूसरी स्टोरी बुक्स क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी जॉलीफोनिक्स के जो रीडर्स हैं वो डिकोडेबल हैं। उनके अंदर ऐसे अल्फाज यूज़ किए गए हैं जिनको फोनिक्स से पढ़ना आसान हो जाता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है जब आप कोई ऐसा स्टोरी बुक या रीडर यूज़ करते हैं जिसके अंदर डिकोडेबल वर्ड्स नहीं है, डिफ़िकल्ट पैटर्न्स वाले कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो बच्चे जो है वो डिस्करेज हो जाते हैं और वो रीडिंग नहीं करना चाहते। ओके, अब आप इस वर्ड को देखें, शार्क्स, आर्क्स, इट्स वेरी मच डिकोडेबल। लेकिन अगर आप दूसरी एक काउंटर एग्जांपल को देखें, बनाना, बनाना को आप देखें, बनाना को डिकोड करना कितना मुश्किल है, ठीक है। ओके, सो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन भी करना चाहें, क्योंकि मैं इस वक्त जो स्कूल्स में सिचुएशन है वो ये है कि हम ब्लेंड कर रहे हैं। हम जॉलीफोनिक्स प्रोग्राम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम रीडर्स कोई और यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास जो है मटेरियल डिफरेंट है और हम एक ब्लेंडेड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे सेशंस दिए होंगे, उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे, स्टेम के, फ्लॉपिस्फोनिक के, ब्लेंडिंग लर्निंग के, ECCA के, मॉन्टेसरी एजुकेशन के। यहाँ पे सारे जो प्रोग्राम्स हैं इनमें इनके अपने जो है लैंग्वेज टीचिंग के एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप अपने स्टूडेंट को जॉलीफोनिक्स मेथडोलॉजी से पढ़ा रहे हैं, जॉलीफोनिक्स से प्रोग्राम से पढ़ा रहे हैं, उस वक्त हम बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं कि आप जॉलीफोनिक्स प्रोग्राम के साथ कोई भी और ब्लेंडेड अप्रोच को यूज़ करें, किसी भी अलहदा से रीडर को यूज़ करें या किसी भी ऐसे मटेरियल को यूज़ करें जो उसके साथ इंटरफेयर करता हो। क्योंकि जॉलीफोनिक्स प्रोग्राम एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसके अंदर लेसन्स प्लान भी मौजूद है, जिसके अंदर रीडर्स भी मौजूद हैं, जिसके अंदर जो है आपके पास वर्ड की लिस्ट और वर्ड बैंक्स भी अवेलेबल हैं। इट्स गुड दैट यू वांट टू एक्सप्लोर। और बहुत सारे स्कूल्स में देखा गया है क्योंकि उनके स्कूल में डिफरेंट जो है सिस्टम्स को ट्राई किया जा रहा होता है, तो उसकी वजह से उनकी टीचर्स, उनके स्टूडेंट जो हैं वो उस प्रोग्राम जॉलीफोनिक्स प्रोग्राम को सक्सेसफुली यूज़ नहीं कर पाते। सो all of these programs are very good in their own aspects, and I can understand that without these programs you cannot teach better. And I would really appreciate if all the teachers of Montessori, of early childhood education, they have the exposure to these programs. They know how to deal the students with behavior problems. They know how to take care of the children at this age level and how to use science and technology and other things in the classroom. But while teaching Jollyphonics program, we need to be careful that our lesson plan should be very much focused
on Jolly Phonics lesson plans and methodology. And you can also compare Jolly Phonics program with other programs and see that how gradually the world is changing. The new researches are coming up and the new technologies are changing the things. Okay, so I would also invite some of the participants to discuss on that. I'm not going to play this video over here because we are having less time at the moment. So let's move to the tricky words and see that how can you teach the tricky words, because these are the words which have irregular spelling patterns in Jolly Phonics program, and these are coming at the end of Pure Book 1. You can teach them through word families or patterns. You can teach them in this methodology. Does it look right while you are sounding it? And you can also use the lesson plan in the Pure Book 1, look, cover, write, check methodology. So there are many people over here who are trying these methodologies, and they are able to manage them. The first step is reading. ट्रिकी वर्ड्स को हम सबसे पहले रीड करना सिखाते हैं, इसके बाद हम स्पेल करना सिखाते हैं. फर्स्ट रीडिंग देन स्पेलिंग. सबसे पहले हम उन्हें पढ़ना सिखाएंगे. This is was. It's not was. We cannot blend this. It's not regular. So it's was. It's a tricky word. It's not do. It's do. It's a tricky word. You can tell them the story that it's magical, and this o is saying the sound of oo, do. It's not her, it's he. Okay, so how to take dictation? I'm quickly moving to the end of the session now. And when you are teaching them the tricky words, you can use methodologies given in the teacher's book. And if you don't have teacher's book, Jolly Phonics teacher's book, you can send us an email and you can get it for free, because these teachers books are very helpful in understanding the teaching methodology. Okay, so let's have a look at some aspects of dictation as well. Jolly Phonics program में आप dictation कैसे करवाएंगे? Even you can write the word on the board. आप board पर word को लिख सकते हैं. जैसे word है ship, board पर लिखें ship. बच्चों के साथ इसको discuss करें. डायग्राफ को अंडरलाइन करें, साउंड बटन्स को ऐड करें. यहाँ पर 3 साउंड्स हैं और 4 लेटर्स हैं. ब्लेंडिंग करें, साउंड्स को काउंट करें, फिंगर काउंट करें. इसके बाद आप बोर्ड को रेज करें, दोबारा वर्ड को बताएं एंड लेट द चाइल्ड राइट इट डाउन विदाउट मेमोराइजेशन. याद करवाए बगैर आपने डिक्टेशन करवानी है. Okay, so you can use lots of things for blending. These are some of the images for blending practice. You can start from here, finger blending, running blending, and you can also take help from digital materials. I'm going to share some digital products as well. There's a digital app, Jolly Phonics Lesson. You can download. E-readers are also available. I can share the link. Jolly Phonics Whiteboard is very good. You can use it for schools, but it's very expensive. If you can't afford, it's okay. You can use the Jolly Phonics Lessons app. You can use screen sharing option for Zoom. You can take dictations, and there are variations as well. You can design your own variations while keeping time management in view. Okay, so now we have discussed 5 basic skills: lesson planning, materials and methodology. Now I'm going to share Jolly Phonics whiteboard software so that you could have a quick look at that one as well, and some of the e-readers. So please try to download them if you can.
Okay, let me know if my screen is visible to everyone. It's an e-reader and it's available for free download. You can download them and I can share the link of the e-readers. How can you download in your iPhone, in your Android devices, in your laptops, desktops? So it's an orange level that goes with the PuBook 1. This is the first reader in the orange set. You can use it in your classrooms. So these are the digital products. You can use them instead of using PDF versions. Now I am going to share whiteboard software that is very much helpful. अगर आप whiteboard software अपने स्कूल के लिए अफोर्ड कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि whiteboard सॉफ्टवेयर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि you know that you can use it for online classrooms and there is no need to buy any book for the pupils. You can even get the things photocopied. Okay, I'm just sharing my screen in 1 minute. I have got some raised hand. Just a minute, I will unmute you guys. Let me know if my screen is visible. So this is the whiteboard software and this software has got everything. You can listen to all the sound. You can teach letter formation. So let's open first page. If you want to listen to all the sound, you can just click Ah. and listen to the sounds. Ooh. Okay, and if you want to go back and come to the page, you see that it's a lesson and you can teach them formation. You can show them the video of the song and you can also tell them formation. It is a sunny morning and Sam is taking his dog Samson for a walk. They like. The snake is in the grass. Okay, so there are some other activities in this portion as well. You can teach them letter formation. See, it is very much helpful for online classrooms. Okay, so it's time for us to have some questions. Yes, one by one, I'm going to unmute you. We have got Miss Shiri. Miss Shiri, can you please unmute yourself? Yes, can you please say something? Well, I think that we have less time. So if you want to share, if you cannot unmute, you can type in the chat box, okay? If there's any problem, you can type in the chat box. Okay, if any one of you wants to contact me, I'm going to share my website address. You can also get the updates and you can register yourselves. Miss Frida, Miss Kainat, can you please unmute yourself? Miss Frida, can you please unmute yourself? Yes, Miss. You want to say something? Yes. Yes. Hello. Assalamu alaikum. Ji, walaikum assalam. Hello. Hello. Yes. Yes, ma'am. Yes. How are you, ma'am? Are you fine? Yes, dear. I'm fine. You have any questions? Name is हमें जो जॉलीफोनिक्स के हवाले से आपने जो पढ़ाया हमें काफ़ी
इसके बारे में लर्न हुआ। ऑलरेडी हम ना क्लास में जो आपने जॉलीफोनिक्स से हवाले से जो पढ़ाया वो हम क्लास में ही यूज करते हैं, लेकिन जो न्यू कुछ इंफॉर्मेशन थे जो हमें आइडियाज मिले, इंशाल्लाह इसको भी फिर हम क्लास में जो स्पेशली डिक्टेशन हवाले से जो आपने हमें जो आइडिया दिया वो बहुत ही फ्रूटफुल था। इंशाल्लाह Okay, इसको thank you हम so much. Thank क्लास you so में much. It's हम thank you so much. बच्चों को हम सिखाएं। What is the name of your school? इट्स ओके मैम। उसवा स्कूल हुंजा। Okay, okay, okay. Thank you so much. आप उसका हमारे कांटेक्ट में रहिएगा। आपसे जो है इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फर्दर। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. Okay. Hello. Hello. इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। Over here. Assalamu alaikum, Miss. जी वालेकुम अस्सलाम. My name is Fida. Very good afternoon from Hunza. Good So I got a afternoon. question over here. Yes. And that is after making familiar students with the 42 letter sounds. So I got basically a question about the letters. For example, if we tell the students the 42 letter sounds, it is okay. But what if, what time we should tell students the names of letters? For example, often I come across this problem in my school that if I ask them to tell me the sound, they just tell me the name of alphabet, like A, naming the alphabet, or sound A. So when should I introduce later naming the letters to the students? In which stage? It's a very good question, sir. What's your good name? Fida Ali. Okay. Actually, you know that it's in our culture, in academic classrooms, that we are all the time facing this problem, and we cannot avoid this problem. So some people, some educationists say that we should not tell them the names of the letters. But actually, I believe that the children already know the names of letters. So we cannot say them, don't say the names, and we cannot tell them that this is the wrong. So in my training sessions, I tell them the activity that you can teach this to the students, that all letters have names and all letters have sounds, just like children in my classroom. Just like Ali, Ali is your name and you have a sound as well. Can you say hello? It's your sound, and Ali is your name. It is the same with the letters. All the letters have names and all the letters have sound. But when we are using the language for reading and writing, for listening and speaking, we do not use the names, we use the sounds. Okay? And Okay, Miss. sir, we will arrange, I had a talk with your head teacher. We are arranging a detailed course for your schools in Hunza. So we will get back to you and we'll discuss things in detail, okay? Okay, Miss. One more question if you have time, please. Yes. Is in the start of the session, you just asked the different words for us as blending, right? So some words we blend, but that doesn't match to the pronunciation. So we have to follow the IPA, as you said, International Phonetic Alphabets. So over here, for example, that was young, right? Yes. So I blend this word ya, o, e, ng. So it doesn't match the original yes. Pronunciation of the young. So for this purpose, we supposed to go through the IPA, International Phonetics Alphabets, for teachers or for students too? Okay, it's a very good question. In fact, let me share something with you. You see that IPA is not for the students. IPA is only for the teachers. Okay. Now. But sometimes students ask questions from us that. That's why I'm for telling example, you. I find a word, but it doesn't match. Yeah. Yes, miss. Yes, when please, you will miss. start teaching through Jolly Phonics program,
because we have got many in this session. There are people who can tell you that when you start teaching with the Jolly Phonics program, they don't give irregular words in pupil box. Okay, now let's have a look at this poster. I am trying to give the answer of your question. Look at this poster. It's very good. It's developed in designs by Miss Debbie White, and it has got all the different spelling patterns over here. Look, for this sound we have got different spellings over here. For this sound we have got different spellings, even for the young word, you see. And sometimes we have got these types of spelling for o, these type of spelling for g. Look at this one, sun. O is saying the sound of a, okay, but we teach them gradually in the grammar program from grade 1 or KG onwards. We do not have lots of irregular words in the Jolly Phonics program. Okay. Okay, Miss. So when you would be in touch with us and we'll be discussing things in great detail, we are going to focus on these things. Okay. Okay. Miss, thank you so much. So we have some other people over here. Miss Sobia, you have any question? Can you please unmute yourself? Miss Sobia, can you please unmute yourself? Okay. Miss Rabia, can you please unmute yourself? Yes, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalam, how are you? My question, Alhamdulillah, I'm fine. Alhamdulillah, I'm fine. My question is, what is the proper and right technique of teaching tricky words? Still, I'm unsatisfied. We always define them. These are naughty words. We can't blend them as it is. We have to learn these words. But in my point, this is not enough because all students haven't same IQ level. So how can we encourage them Ms. to Rabia, learn? can you What is please the proper? introduce yourself? Yes, I'm working as a teacher in LGS. Okay. I'm from Mandi Bahauddin. Okay. Yes. Okay, So Rabia, it's good to see you over here. And I think that I have posted my WhatsApp number and email address in the chat as well. So you can stay connected. Okay. Your question is very important to me and you're right about this thing, because this session was just an introduction and just a review for some of my course participants. It is not a detailed one. So okay. You are right that this is not enough. So we have got some other things along with this one. We use the tricky words in almost all readers, and let me share another reader with you so you could see that how we are trying to consolidate, reinforce and do lots of revisions of the tricky words. Okay, so let's share. I have another question, if you don't mind, please. Yes. I want to ask about blending. This is very interesting and this is very important step. Blending, how we can encourage our students about blending. When we start blending, our students haven't enough confidence to pronounce or blend the word. What is the trick? Rabia, what is I will tell you, just a minute. Look at this one. This is again a tricky word tree over here. We have got tricky word stars, we have got tricky word posters, we have got tricky word activities, we have got tricky words in the readers. So we work on lots of different things, but when you use the Jolly Phonics program as the whole program, not the blended one, if you blend it, mix it with other things in your classroom and you don't follow the teaching steps of Jolly Phonics program, then this program can be ineffective and unsuccessful in your classroom. There are many people over here. I'm working with thousands of schools in Pakistan and abroad, and I have seen many of such unsuccessful examples over there. So if you want it to be successful, you need to consult, you need to talk, you need to tell your problem, and you need to follow the directions, because it's not very easy. It's not just have the books and teach. It's very different. You need to understand. I would like to invite Miss Ilaf over here. Ilaf, are you there? Can you spare just 2 minutes for us? Just 2 minutes. And could you please explain and you could give the answer of this question? First, please introduce yourself. Assalamualaikum, ma'am. How are you? I'm well, Ilaf, dear.
Please introduce yourself. Tell us that you are doing different courses, and please explain something about your courses as well, what you have done. Yes, ma'am. Sure. Assalamu alaikum, all of you. I have done my 1-year diploma from GMCI, STEM, ECC, and Montessori, and my school management diploma is continued. So, this whole year, जब से जो है मैम फातिमा के साथ या GMCI के साथ मैं अटैच हुई हूँ, और मैंने एज अ स्टूडेंट मिस फातिमा से, मैम फातिमा से पहले इन तमाम चीज़ों को सीखा, पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इन तमाम चीज़ों को आज मैं एज अ ऑब्जर्वर के तौर पे ही सेशन में आई हुई थी कि मैं ये देखना चाहती थी कि अब क्या मेरा लेवल है, और जब मैंने स्टार्ट किया था तब क्या था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और एज अ ट्रेनर भी जो है, अब मैं जॉली फोनिक्स की जो हमारा प्ले ग्रुप है उसको टीच कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैम फातिमा ज़हरा की हेल्प से। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। और ये इस प्रोग्राम में हम लोग बच्चों को, हमारे जो यंग लर्नर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं इन ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि इस पूरे कोविड के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी हमारे यंग लर्नर्स को, हमारे वो बच्चे जो प्ले ग्रुप के, नर्सरी या 1st या 2 ग्रेड के होते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी ये चीज़ है। और ये सारी चीज़ें, ये सारा प्लेटफॉर्म जो है वो मैम फातिमा ने ही अरेंज किया, और उनके थ्रू ही ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पाई। तो हमारे साथ जितनी भी मदर्स हैं, इस सेशन में तो खैर वो नहीं है, लेकिन हमारे साथ जितनी भी मदर्स हैं वो खुद बहुत अच्छा फील करती हैं। और जिन स्टूडेंट्स को हम लोग टीच कर रहे हैं वो 2.5 years के जो बच्चे होते हैं उनको, तो इसमें जो है उन बच्चों को Ilaf, do you think that when we start from a 2.5-year-old child, we start teaching them the sound, when they would be at the age of 4, how their blending would be? बिल्कुल मैम, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आपको अच्छी तरह पता है, ये जो मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं बच्चे, बिल्कुल 2.5 years के। और माशाल्लाह उनकी साउंडिंग, उनके ग्रुप में जो वीडियोस और एक्टिविटीज़ हैं, उनके साउंड्स इतने अच्छे, और इनको उनकी खास तौर से जो लेटर फॉर्मेशन वो करते हैं बहुत एग्जैक्ट, और ब्लेंडिंग जो है वो भी बहुत अच्छी। जो हमारा बैच 2 है जिसको जो है वो माशाल्लाह मैम आप बहुत अच्छे से लीड कर रही हैं, उसमें बहुत ज़बरदस्त जब पेरेंट्स अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ जो वो परफॉर्म करवाते हैं, अपलोड करते हैं, तो दे आर अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी हैं। मतलब हम लोग Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. We have less time. Okay, we have Taiba over here. Taiba, could you please talk about blending? And could you please share the challenges you are facing in your school? How you started blending? Yes, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Assalamu alaikum, everyone. I'm Taiba, and I did Alhamdulillah a course from Ma'am Fatima Zahra, and I want to tell all of you that जब हम लोगों ने ब्लेंडिंग स्टार्ट की थी तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, मतलब ब्लेंड करते हुए वो शुरू में जैसे मैम ने पहले ही बताया कि वो स्टक ऑफ हो जाते हैं, तो ये एक नॉर्मल बात है, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई फील ग्रेजुअली कि उनमें इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई है कि मेरे पास 3 years का स्टूडेंट है और 3.5 का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्लेंडिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से ये ब्लेंडिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मैम। बेसिकली ये जो क्वेश्चन राबिया ने किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ब्लेंडिंग जो है उसको इसके बाद उसको ट्रिकी वर्ड्स के साथ लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप प्रीपर बुक 1 स्टार्ट करते हैं तो आपके बच्चे एकदम से ब्लेंडिंग करना शुरू नहीं कर देते। सबसे पहले आप उनको साउंड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसके बाद 2 letters की ब्लेंडिंग होती है जिसमें एक गेम होती है जिसको कहा जाता है कॉन्सोनेंट वावल स्नैप। मैं भी आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। सो कॉन्सोनेंट वावल स्नैप जो है वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें बच्चे जो है सबसे पहले 2 letters की ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं। जब वो 2 letters की ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो 2 letters की ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो 2 letters को इकट्ठे नहीं बोल पाते, बल्कि वो उनको सेपरेटली प्रोनाउंस कर रहे होते हैं।
सो टीचर्स को बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ता है और टीचर्स को बहुत ग्रेजुअली देखना पड़ता है कि वो किस तरह से इनको लेकर चल रही हैं। अगर टीचर्स समझती हैं, अगर 2-3 डेज या 1 वीक के बाद ही अगर टीचर्स डिसहार्ट हो जाएं और ये समझें कि अब बच्चे ब्लेंडिंग तो कर ही नहीं रहे, बच्चे 3 लेटर वर्ड्स को ब्लेंड नहीं कर पा रहे हैं और ख एट को कैट पढ़ने के बजाय बार बार जो है वो ख एट ही कहे जा रहे हैं, तो ये बहुत नॉर्मल है। अगर आपके स्टूडेंट्स बार बार रिवाइज करें ख एट कहे जा रहे हैं तो ये एक हेल्थी साइन है, ये इस चीज़ का साइन है कि अब आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो रेडी हो रहे हैं ब्लेंडिंग के लिए। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विद यू बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. Let's have a look at this one. You can use this game for the early introduction of blending and it's very helpful. It's tried and tested. Okay, let me know if you can have a look at this one. Okay, so n a n e n i n o n a. यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर ने न नहीं पढ़ना, टीचर ने सिर्फ इंट्रोडक्शन करवानी है न। अब स्टूडेंट इसको ब्लेंड करना है। अगर टीचर इसको पढ़ेंगी तो क्या होगा, बच्चे टीचर्स को कॉपी करेंगे, वो कॉपी करके याद करने की हैबिट डेवलप कर लेंगे और वो बिल्कुल भी उसको ब्लेंड नहीं करेंगे। सो प्यूपिल बुक 1 के 3 लेटर वर्ड्स से पहले आप उनको ये 2 लेटर वर्ड्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं। आप कॉन्सोनेंट्स को चेंज करें, वॉवल को चेंज करें, अपना वाइट बोर्ड यूज़ करें, जूम यूज़ करें, व्हाट्सएप यूज़ करें और उसको करवाएं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, जो मैं समझती हूँ बहुत चैलेंजिंग भी है, शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉल साउंड्स हैं। सबसे पहले शॉर्ट वॉल साउंड्स आ जाते हैं। अगर आपके स्टूडेंट्स को शॉर्ट वॉल साउंड जो है वो अच्छे तरीके से नहीं आ रहे हैं तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं ब्लेंडिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है शॉर्ट वॉल साइन को समझना। उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है हैंड साइंस की। जो भी लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्रुप्स के अंदर, उनके साथ ये पहले भी शेयर हो चुकी है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दिस वन अगेन। और अगर आप हमारा डिटेल कोर्स जो है वो ज्वाइन करें तो आप देखेंगे कि आप इनको किस तरह से एक्टिविटीज़ के से करवा सकते हैं। ठीक है, एट द साइड ऑफ द बॉक्स, एट द एज ऑफ द बॉक्स, ई इन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स, अंडर द बॉक्स। अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लेंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपका स्टूडेंट जो है वो वॉवल को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, जो ज़्यादातर यहाँ पर होता है, ख़ासतौर पे यहाँ पे हमारे लोकल क्लासरूम में ये होता है कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं लेटर्स के नेम्स को और उन्होंने वॉवल्स के नेम्स लर्न कर लिए होते हैं। ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो वी टेल देम दैट वी हैव गॉट शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स, ए E, O, A. Short vowel sounds A, E, I, O, U. Long vowel sound. अगर हम short vowel sounds को names करवा देंगे, names के जरिए से करवा देंगे, A, E, I, O, U कह देंगे, तो फिर हम long vowel sounds के बारे में कोई explanation नहीं दे पाएंगे। So these are all like this: A, E, O, A. बच्चों को ब्लेंडिंग करवाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि टीचर्स की खुद की कॉन्सोनेंट और वॉवल्स की ब्लेंडिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, सो we have got many courses, 3 days courses, 1 day courses, 4 months or 2 months courses. You can join our courses and you can share your ideas and you can post your questions. And now I'm just going to conclude because I can understand that there are people over here who have got some other sessions as well. Thank you so much, everyone. I can understand that I could not get many other questions as well. So you can post your answers. You can type in the chat box for next 2 minutes and let me know what you have learned. And if you have any other questions, I'll try to answer your questions in the WhatsApp groups. We have someone with the raised hand, Shayan. You have any questions?
मैम वो आपने लास्ट में क्लियर कर दिया मुझे ना कि ये जब हम ब्लेंडिंग बच्चे को करवाएंगे 2 लेटर्स की, तो उसको हमने किस तरह से करवाना है डिक्टेशन में। Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. Your questions are very important for me. Okay, teachers and mothers and everyone, thank you so much for being here. It's Allah Hafiz from my side. I think that Rabia, you have got your answer to your question as well. So if you are still not satisfied, you can inbox me, okay?